जी मोमिना। अच्छा मोमिना, आपका ना चैप्टर नंबर जो 10 है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हो गई, अरेज हो गई, आपकी क्यूज हो गई, स्टैक हो गई, लिंक लिस्ट हो गया। ये चैप्टर मेरे साथ आपने इससे पहले जो पिछला सेशन हुआ था उसमें किया था, या आपको इसके बारे में मजीद मेरी तरफ से रिक्वायर्ड है कि आपको एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में पता हो? 1D 2D अरे, बबल सॉर्ट और लीनियर सर्च, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? और फाइल हैंडलिंग खास तौर पे एंड पे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस आते ही हैं। क्या स्टेटस है आपका? जी, क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया था मोमिना। क्या स्टेटस है आपका चैप्टर नंबर 10 के बारे में? 9, 11, 12, इसमें से जो टफेस्ट चैप्टर्स है ना वो 10 11 है। 9 and 12 इज क्वाइट इजी ना? तो मुझे इस चैप्टर की या इस चैप्टर से रेलेवेंट क्वेश्चंस अगर आपने देखने हो या करने हो, एक्चुअली मैं आपको ना इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि शायद हमने पेपर सेशन स्टार्ट हो गया था हमारा, तो ये चैप्टर की डिटेल मैंने आपसे शेयर नहीं की। अगर तो आपको क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट्स की, पेपर जब मैं आप पे चेक करता हूँ मुझे लगता है सब कुछ आता है आपको। अब चूंकि मेरे साथ आप लाइव यहाँ पे ऑनलाइन मौजूद हो, तो आप बेहतर समझते हो कि अगर तो आपको चैप्टर नंबर 10 है ये, डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा टाइप्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर, अरेज, फाइल्स, और आखिर का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। कितनी क्लैरिटी है आपको? इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त कोई दिक्कत? टू डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स आर देयर, फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड एंड सेकेंड वन इज अरेज. You need to have clarity about two different structures, record and arrays. When we use record structure to store your data, and when we have to choose arrays, what is the difference between those two data structures? And how to handle text files, which consists of many lines. You need to write some instructions if you want to read, or sometimes you need to append or write. And finally, three different concepts about ADT: stack, queue, and linked list. How to initialize your stack, how to populate your stack, what is the basic principle. You need to learn last in, first out principle in case of stack, first in, first out in case of queues, and linked list is another kind of abstract data types which you need to learn. क्या इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस किए जाएं, ताकि अगले वीकेंड के ऊपर मैं फोकस होके इससे रेलेवेंट आपसे पेपर में कुछ क्वेश्चंस को मैं पिक एंड चूज करूं और आप आंसर करो? क्या ख्याल है? हाँ। ओके। बेसिक डेटा टाइप्स आर देयर, लाइक इंटीजर, रियल,
date, Boolean, string, character. And you need to have some kind of a identifier to represent all those items or values. This is also known as a variable and sometime constants. Record is a data type. What kind of data type? What is the structure of record? It actually a composite data type. Composite means what? You have several related items, but the difference is these data item may be of different data types. Like student, you can see student name, first name, last name, both are strings. But in case if you want to save in that structure date of birth, the data type is different. If you want to store age, the data type is different. If you want to store its fees or father's salary, the data type is real. In case sometime you need to have some values like yes, no, 1, 0, the data type is different, like Boolean is there. So record is a special structure which contain related items, but they may be have of a different data types. Okay. Array is another data structure which contains several elements, which have several elements inside, like student name, like student email, like student marks, which contains several elements, means values, but all the values of same data type. This is actually difference between record and array. The major difference is that it contains related fields, related items, related headings, but of different data type. Some of them are same, but mostly they are different. But in case array, both are data structure. Record and arrays, both are data structure. But when we use array and when we have to go with the record, it depends on which kind of values we have. If different fields are there, which have different data types, then always go with record. But sometime we need to have several element, but the data type is same. Then go with arrays. Another important topic is there, composite. Composite mean what? A data type constructed using several of the basic data types available in a particular programming language. Composite. And here you can see, and at the end of chapter, we have a lot of questions from abstract data type is a collection of data and set of different operations like stack. Stack is a special collection of data which contains several items and some operations. How to add in stack, how to delete in stack. Two very special functions are there. One is known as push. Push mean add into stack. And one is pop. Pop mean you need to delete from stack. In case queue is another type of list of items, several items. Operations are there. And these operations are first in, first come, first in, first out principle. And stack is all about last in, first out. Means that stack is there. You need to push first value, which is there. You need to push another value.
If this stack contain 10 elements, then this is your first element and this is your last element. And all the operation related to add in a stack is known as push. And if you want to remove, always remember last in, first out. If you want to remove 23, you need to remove first element number 10, then 9, then 8, then 7, then 5, 3, 2, 1. Then in the last, this element can pop or remove or delete. Last in, first out. This actually works on which principle? Last in, first out. Some operations are there, like if you want to declare a stack, empty stack, how to do it. If you want to populate, which is special method is there, push is there. And two important pointers are there. Base pointer and top pointer. Base pointer and top pointer. Top pointer mean the position where you want to populate your data. Initially, this is below than 0. If this is 0 and this is 9, then top pointer is -1. Top pointer -1 means there is no element. And whenever you want to populate, you need to add first in top pointer. It will move on point to this location where you need to add element. After adding this element, top pointer is again +1. Then you can add another element. After adding this element, top pointer is to next element. Then you add element. And in this way, when top pointer is equal to 10, then the stack is full. And in case if stack is full, another operation which you need to remove from this stack is pop. Pop mean you need to check the top pointer position. If top pointer position is on element number 9, then it's mean you have all those elements in this stack. You need to move this one. Then top pointer is -1. In case pop, top pointer is -1. In case of push, top pointer is +1. First of all, top pointer is -1 means there is no element. When top pointer locates on next available position of stack, it means if this value is 10, there is no room for another element. The stack is full. But after removing or after popping this element, the top pointer need to decrement by -1. So every time, whenever you use pop, top pointer is -1. Whenever you push, top pointer +1. In this way, all the element in this stack is managed. Stack is there. अच्छा मोमिना, मुझे लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सूडोज या ये भी आपने करने हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. लीनियर सर्च एंड बबल सॉर्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. और ख़ास तौर पे आप जब A2 में आओगे, A लेवल्स में, आप पेपर नंबर 3 and 4, दीज टॉपिक्स आर रिपीट अगेन अगेन. पक्की बात है, क्लियर है ये लीनियर सर्च एंड व्हाट अबाउट स्टैक एंड क्यू? ये ऑपरेशंस के बारे में आइडिया है, पॉप पुश एंड हाउ टू कंट्रोल पॉइंटर्स, टॉप पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर. यहां से स्टार्ट कर दूं अगर आपको क्लियर है तो. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या कहते हो? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ा दूं?
इससे रेलेवेंट क्वेश्चन देख लें फिर। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम भी शायद ये हमने नहीं किया था, या किया था मुझे याद नहीं है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं। Type and n-type as their variable data types are different. Name is age, your date of birth. You need to go with this one, record data type, and how to define and how to declare instance of that data type, how to store or initialize those values. Arrays are there, is a structure which contains same data type. Upper bound and lower bound is there. After this topic, 2D array is there, where row values as well as column values are controlled. The syntax is different. This is the declaration point. You need to tell row number as well as column if you want to store some value at that specific location. Linear search is their very important topic. ये आपका अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये आपके पास ये डिक्लेरेशन है, ये इनिशियलाइजेशन है। इफ यू नीड टू फाइंड एन आइटम, दिस इज वे found is false, lower bound is there. My list में one by one element is compared with your given one जो आपने सर्च करना है। जैसे मैच होता है फाउंड की वैल्यू ट्रू, और हर दफा नहीं मैच होता तो इंडेक्स प्लस वन। मैच होने पे या इंडेक्स वैल्यू क्रॉस होने पे अपर बाउंड से इट विल जस्ट क्लोज और ब्रेक दिस लूप, और आफ्टर फाउंड इज ट्रू देन आइटम फाउंड, इफ नॉट देन नॉट फाउंड। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं लीनियर सर्च में किसी किस्म की? ओके, नेक्स्ट, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में ये आपको वो आइडिया है ना, डिक्लेरेशन वाला पार्ट, ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, और रिपीट अंटिल, अंटिल व्हाट, स्वैपिंग इज टॉप और टॉप इज इक्वल टू जीरो, जो कि हर दफा -1 हो रहा है। ये भी क्लियर है? बबल सॉर्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर? व्हाट इज द यूज ऑफ टेम्प? एवरीथिंग इज क्लियर? हाउ टू स्वैप? ओके, क्योंकि मैंने इस वीक में ना स्टैक क्यूज और लिंक लिस्ट के क्वेश्चन देने हैं, इसकी प्रैक्टिस करो आप। फाइल हैंडलिंग क्लियर है? ये तीनों मॉड्स, ये कमांड्स, एंड ऑफ फाइल, इंडिकेटर, पॉइंटर, क्लोज फाइल, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। ओके, पहले तो ये बताओ, आपने मेरे साथ कोई सेशन इसका लिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स का, या इट्स फर्स्ट टाइम? नो सेशन? ओके, इसका मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने इसका बेसिक मेरे साथ अगर आपने लास्ट सेशन लिया होता तो शायद आज हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये अच्छा हो गया, ये हम कर लेते हैं इसको। चैप्टर नंबर 10 में ये वाला पार्ट है जो हमें करना चाहिए। लॉट ऑफ क्वेश्चन नीड टू क्लियर दीज इंपॉर्टेंट topics. Abstract data type is a collection of data and some kind of operations on that data. Data and set of operation
Like if you want to push or add in stack, how to do it. If you want to enter in a queue, how to do it. How to insert a node in case of linked list. Three different abstract data types are there. You need to know all three. Second one is there, queue. Third one is और practically कहाँ इस्तेमाल होता है स्टैक, कहाँ इस्तेमाल होता है क्यू, कहाँ इस्तेमाल होता है लिंक लिस्ट, और इससे रेलेवेंट कुछ ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्टैक you need to add items on the stack, and operations to add an item is also known as push, or you want to remove an item from a stack is known as pop. So three ADTs are there: stack, queue, and linked list. Practical or real-time example is there. Stack is in memory management. मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक को इस्तेमाल किया जाता है मैनेज करने के लिए. इफ यू लॉन्च और अ कंप्यूटर नीड टू कंट्रोल ऑल द प्रोसेसेस, जब कोई प्रोसेस चलता है इट नीड ए मेमोरी. देन सेकंड प्रोसेस इज लॉन्च, सेकंड प्रोग्राम इज लॉन्च, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए मेमोरी और सीपीयू. तो हाउ टू मैनेज बाय कंप्यूटर? This is memory management. To learn more, you need to go and see 16.1. मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक को इस्तेमाल किया जाता है. If you want to evaluate some kind of expression, again in chapter 16.3, expression evaluation. If you want to add something, operator is there, operand is there, how to carry on some kind of expression evaluation like this one. Stack. How to do is all the values are put into stack. Stack is there, operators are there. How to do is how to evaluate the expressions. You need to learn about stack. If you have any idea about factorial, like if you make some kind of a function which is required to calculate a factorial number. 3 factorial mean this number call inside again same function. This means 3 multiplied by 2 and call again same function. This is actually known as recursion. Multiply by 1 until it is 0, base class is 0. So recursion is backtracking. 19.2 is the chapter. All the three required some kind of abstract data types like stack in order to use or manage memory, in case evaluation of expression, in case in recursion, you need to call again and again same function. This is also known as backtracking. Stack is there. If sometime examiner asks, tell me some examples where you can implement stack, then without any delay, you just give an answer in memory management, in expression evaluation, and backtracking in kind of a recursion. Always implement their stack. And what about queues? As you know, wherever you have kind of environment, lot of people are sitting, and all the or some group of people need to have print. The problem is there, printer is a single.
just one printer is available. How to manage by printer all the files which is sent by user 1, user 2, user 3 at the same time. How to do it? How to manage all those files? Then there is a concept of queues, and how to tackle or how to manage this or how to solve this problem. How to know first file is there, who sent the first file, what is the priority of that file, if boss is there, highest priority is there, how to do this, how to management of files sent to printer is done. Queues concept is there. Another important implementation where you can see the queue is buffers. Buffer means whenever you press any key, it will check its exactly ASCII code or Unicode, then convert this code and into binary format, and then process those values using different kind of buses are there, data bus, address bus, or memory control bus are there. The buffer also used queues, buffering. If some kind of processing is there, or if you want to print something, buffer is there, which used to hold data temporarily before this processing values are forward towards printer hardware. Another very important where you can see the queues is scheduling. Scheduling is there. Lot of scheduling. You can see 16.1, four major scheduling are there. 16.1 टॉपिक एज यू कैन सी स्केजुलिंग में आपको लाइट साइज का टच देता हूं. स्केड्यूल करना, जैसे अगर आपको मैं कहूं आपने दो काम करने हैं, तो आप किस बेस पे वो काम करोगे, पहला कौन सा, बाद में कौन सा. मैं चार काम दे दूं, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा. एज ए ह्यूमन आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पहला मैं कैसे करूं, दूसरा बाद में, सर ने कहा था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में कर लेते हैं, तीसरा और कम इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर पे कर लेते हैं. ये स्केजुलिंग होती है. सीपीयू रिक्वायर्ड होता है बाय ऑल द प्रोसेसेस. तो स्केजुलिंग इज देयर. स्केजुलिंग के लिए आपने कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम सीखने होते हैं. 16 पॉइंट में था शायद. ये जी स्केजुलिंग, हाउ टू मैनेज प्रोसेसेस. Multitasking is there. How to use different scheduling routines. As you can see in chapter number 16, round robin is there. Shortest job को पहले खत्म कर दिया जाए. या एक और scheduling mechanism है, जो पहले आए उसको पहले खत्म कर दो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. एक और है, एक बिग जॉब प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, सीपीयू में बिजी है, एक शॉर्टेस्ट कोई जॉब आ जाती है जिसको प्रोसेसिंग के लिए कुछ टाइम चाहिए लेकिन कम चाहिए, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. एक राउंड रॉबिन भी होता है. चार स्केजुलिंग की टेक्निक्स हैं. लो लेवल स्केजुलिंग की चार डिफरेंट टाइप्स हैं: राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. दिस इज ऑल अबाउट स्केजुलिंग. तो स्केजुलिंग में भी क्यूज इस्तेमाल होते हैं. स्केजुलिंग में क्यूज इस्तेमाल होते हैं. सो इन चैप्टर नंबर 16 क्यूज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्केजुलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें ये 16.1 में आपको क्यूज का टॉपिक अगेन कंसिडर करना पड़ेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिंक लिस्ट अरेज में इंप्लीमेंट होता है, क्यूज में भी इंप्लीमेंट होता है, और बाइनरी ट्री में भी इंप्लीमेंट होता है. ये स्टैक है जी. कल से स्टार्ट करेंगे.
और इससे रेलेवेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। 3 आपसे एक डाटा टाइप्स आपने पढ़नी है, स्टैक, क्यूज एंड लिंक लिस्ट। इसको थोड़ा सा टॉपिक को ना आप बुक को रीड कर लेना, ताकि फिर मैं जब आपको कल करवाऊं तो इसमें कुछ पॉइंटर्स को देखेंगे, बेस पॉइंटर, टॉप पॉइंटर, हाउ टू डू इट। स्टैक में जब जाएंगे ऑपरेशंस करने के बाद, फिर इसके कुछ जो सुडोज हैं, सेटअप कैसे करते हैं, पुश एंड पॉप कैसे करते हैं, और इसकी कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह कल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।